morning students. Today I will teach you the first chapter of physics, that is light, reflection and refraction. So the first question arises in front of us, that what is light? It is a very basic simple question. We have studied earlier in previous classes that light is a form of energy. Light क्या एक form of energy है, जैसे कि various energies are there, heat energy, geothermal energy, kinetic energy, and lots of energies are there. Light is one of them. And what is light? Light is a form of energy. We can see any object in presence of light. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जब वहां पर लाइट होगी. अगर if there is no light, then we cannot see any object. अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को नहीं देख पाते. क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है. Light travels in a straight line. ये लाइट की प्रॉपर्टी. Now we will move to the second topic, that is nature of light. Nature of light क्या है? Nature, जहां तक की बात करते हैं नेचर की, तो लाइट possess dual nature. Dual nature means particle nature and wave nature. Light travels in the form of wave and also in the form of particles. So the wave theory of light tells us that light travels in the form of electromagnetic waves. Light एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है in the form of electromagnetic waves and they require no medium. ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सेकेंड नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर. अब लाइट ट्रेवल करती है एक बीम के फॉर्म. वो बीम जो बनता है वो स्मॉल टिनी पार्टिकल्स से बनता है. दैट स्मॉल टिनी पार्टिकल्स आर नोन एज फोटॉन्स और एनर्जी क्वांटा कह सकते हैं. ठीक है. तो अब बात करते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू लाइट. कुछ टर्म्स हैं लाइट से रिलेटेड. बेसिकली जनरल टर्म्स आर देयर. व्हाट इज सोर्स? सोर्स इज एनीथिंग फ्रॉम विच लाइट ऑरिजिनेट्स. जहां से लाइट ऑरिजिनेट होती है, जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड लाइट सोर्स. लाइट सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, luminous and non-luminous. Luminous sources are what? Very common question. What are luminous sources? Luminous sources are those sources of light which generate their own light. For example, moon, star, any torch, any bulb, ये अपनी लाइट स्वयं जनरेट करते हैं खुद से. बट if we talk about the non-luminous sources, non-luminous sources क्या है? Non-luminous sources are those sources which we can see in presence of light. जब किसी लाइट सोर्स से उस पर लाइट पड़ती है उस ऑब्जेक्ट पर, तब हम उस चीज को देख पाते हैं. That are non-luminous sources. Now the next topic is. Now we will study about our next topic, that is medium. Medium are of three types: opaque, transparent, and translucent. What are opaque medium? Opaque medium are those mediums through which light cannot pass. जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती. फॉर एग्जाम्पल दिस पाइप, लाइट कैन नॉट पास थ्रू फ्रॉम हियर टू हियर. यहाँ पर लाइट नहीं पास हो सकती. व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट मीडियम आर दोज मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू इजली. या हम कह सकते हैं कि जितनी लाइट भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो जितनी भी लाइट रे यहाँ पर जाएगी वो वापस इधर से निकलेगी. That is transparent medium. And translucent medium, those medium through which light can pass through but partially. पूरी लाइट रे पास नहीं होंगी यहाँ से यहाँ तक. कुछ लाइट रेस पास होंगी, कुछ लाइट रेस एब्जॉर्ब हो जाती है इस मीडियम के थ्रू, ट्रांसलूसेंट मीडियम. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ट्रांसलूसेंट मीडियम इज बटर पेपर. उसमें आप देखिएगा कुछ ब्लरी दिखता है. Now the third topic is ray. What is ray? The ray of light is a combined form of lots of beams. Lots of beams, or we can say that lots of beams combine to form a ray. Ray का proper क्या है कि जब कई सारी beams मिलके एक ray बनाती हैं. Now the ray are of three types: parallel beam, convergent beam, and divergent beam. Parallel beam. In parallel beam, all the rays are parallel
convergent beam, light ray coming from different sources converge at a single point. This is convergent beam. And divergent beam, single light source is there, and from this source, light rays are going into different direction. Means light rays are diverging. So in these three cases, in parallel beam, light rays are parallel to each other. In convergent beam, the light rays are converging at a single point, and while in case of diverging, the light rays are going into different directions, or we can say that scattering in different directions from a single source. Now we will talk about reflection of light. The next topic is reflection of light. These are of two types, regular reflection and irregular reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ प्लेन सरफेस, स्मूथ प्लेन सरफेस. So the light rays coming in the form of parallel rays reflect parallelly. The incident ray are parallel to each other, and while the reflected ray are also parallel to each other. This is because the reflecting surface is smooth. While in irregular reflection, the reflecting surface is dull, like this. Although it is shiny, but it is dull surface. Reflection will occur, but partially. Like the ray coming here, it is reflecting back here. The ray coming like this will go here. The ray coming like this will go here. Means there are a lot of irregularities in this process, irregular reflection. Now, the terms related to reflection, there are some terminologies which we have to understand while studying what is reflection. So the first term is incident ray. What is incident ray? Incident ray, as the name suggests, incident ray means incoming ray. जो भी ray आ रही है, like this is incident ray. Now the point of incidence. Point of incidence is that point where the incident ray strikes the reflecting surface. This is point of incidence, this point. Now, what is the reflected ray? Reflected ray is this ray, the ray which gets reflected from the shiny surface or from the reflective surface. This is what? Reflected ray. Now what is normal? Normal is a line perpendicular to the reflecting surface. Although it is an imaginary line, not any real line exists, but an imaginary line is there which we call normal. This is normal. This is normal. Now the next, angle of incidence. Angle of incidence is the angle which incident ray makes from the normal. Angle of incidence है क्या? Incident ray means ये जो ray है normal से कितना angle बना रही है? This angle. This is angle of incidence. Now angle of reflection. Alike angle of incident and angle of incidence. What is angle of reflection? The reflected ray, the angle made by reflected ray from normal is called angle of reflection. Now we will study the laws of reflection. Basically, there are two laws of reflection. The first law indicates that the incident ray, this ray, the reflected ray and the normal, all these three rays lie in the same plane. Means
चीज क्या है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में होंगी। एक प्लेन इन द सेंस हम कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन में होंगी, वाई जेड प्लेन में या जेड एक्स प्लेन में। ठीक है। नाउ द सेकेंड लॉ इंडिकेट्स दैट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये एंगल है, दिस एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट इन केस ऑफ दिस सेकंड लॉ देयर इज वन केस आल्सो, इफ द रे इज कमिंग नॉर्मली टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर कोई लाइट रे नॉर्मली आ रही है, मींस वो 90 डिग्री बना रही है कहां से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, then the light ray will move in the same direction। अगर लाइट रे 90 डिग्री का एंगल बनाकर टकरा रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, then it will reflect back in the same direction। Now what are objects? Object refers to anything which gives us light rays। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो हमें लाइट रेज देती है, either by its own or light rays get reflected from it। For example, ये पेन है, इसके ऊपर लाइट पड़ी और हमारी आंखों में गई, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। एंड व्हाट इज इमेज? इमेज इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है? एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। सो इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? द रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। एनी इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। द रियल इमेज, द एग्जांपल ऑफ रियल इमेज इज द प्रोजेक्टर which we can see in theaters। प्रोजेक्टर क्या करते हैं? इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो प्लेन मिरर में जो हम लोग देखते हैं, दैट इज वर्चुअल इमेज। टू थिंग्स आर क्लियर, दैट रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधी, स्ट्रेट। Now the next topic is lateral inversion। Lateral inversion में क्या होता है? When we stand in front of a plane mirror, the right side of our body seems to be left side। Right side जो होती है body की, वो left side की तरह seem करती है, appear होती है। This is called lateral inversion। The best example of lateral inversion is ambulance। You can see on ambulance it is written in the reverse order, means उल्टे अक्षरों में ambulance लिखा रहता है। ऐसा क्यों होता है? कि in case of lots of traffic, if there is lot of traffic on the road and ambulance is coming behind a vehicle, then the driver in that vehicle can see that an ambulance is coming from outside and he can see the lateral inversion in the side mirror। So students, our next topic is the reflection of light from curved surface। So the basic question arises, what is curved surface? Curved surface is any surface which is not straight। The surface which is slightly bent in nature, that is curved surface। Bent कैसे? This is straight surface and this is curved surface, like this। This surface is curved। Now, as we can see that spherical mirror is an example of curved surface। Spherical mirror क्या है? Curved surface के एक example है। So now we will study the reflection from spherical mirror in the next topics further। We will study the reflection from spherical mirror। The basic question arises here that what is a spherical mirror? A spherical mirror is a mirror which is cut from a sphere of glass।
एक बड़ा सा स्फीयर है ग्लास का, उससे एक टुकड़ा काट लिया एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आइदर द इनर सरफेस और द आउटर सरफेस। उस टुकड़े की अगर हमने इनर सरफेस पॉलिश कर दी तो आउटर सरफेस विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, and if we polish the outer surface then the reflecting surface will be the inner surface. These are the two types of spherical mirrors. यही दो प्रकार के spherical mirror हैं, concave mirror and convex mirror. What is concave mirror? If we polish that piece of glass which we have cut from that sphere of glass, if we polish on the outer surface, अगर उसकी outer surface को हमने polish कर दिया, then the inner surface will act as the reflecting surface. जो अंदर की surface है वो क्या करेगी? Reflecting surface. अगर हमने ये polish कर दी तो जो अंदर की surface है वो reflecting surface की तरह act करेगी। तो ये हो गया concave mirror. And if we polish on the inner surface of that piece of glass, अगर हमने उस कांच के टुकड़े के अंदर साइड में पॉलिश कर दिया तो बाहरी सरफेस जो आउटर सरफेस है that will be the reflecting surface. See, this is the reflecting surface, outer surface. Now some terms related to the spherical mirror. What is the first term? Center of curvature. Center of curvature is basically the center of that sphere from which that piece of glass is taken out. Center of curvature basically है क्या कि जो एक बड़ा सा कांच का गोला था उसमें से हमने जो कांच का पीस निकाला था टुकड़ा, उस बड़े गोले का सेंटर, that is the center of curvature. एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बहुत बड़ी फुटबॉल है, उसमें से हमने स्लाइडली एक चाकू से काट के गोला निकाल लिया इतना बड़ा, तो वो उस फुटबॉल का जो सेंटर होगा that will be the center of curvature. Now what is pole? Pole is the center of the reflecting surface of spherical mirror. Pole क्या है? उस टुकड़े का सेंटर, उस टुकड़े का सेंटर कैसे कि जो टुकड़ा मान लीजिए हमने इतना टुकड़ा काटा तो इसके बीच का जो सेंटर होगा दैट इज पोल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर एंड पोल इज द सेंटर ऑफ दैट ग्लास व्हिच वी हैव टेकन आउट। नाउ द थर्ड topic is radius of curvature. Again, what is radius of curvature? Radius of curvature is the radius of that big sphere of glass from which that piece of glass is taken out. वो बड़ा sphere जो था उसका कोई radius होगा, that is the radius of curvature. It is denoted by r, basically ये r से डिनोट किया जाता है। Now the next topic is principal axis. Principal axis is the straight line passing through the center of curvature. एक straight line है, देखिए, this is called principal axis. ये देखिए एक straight line जा रही है passing through center of curvature. This is the center of curvature. Straight line pass हो रही है, that is principal axis. Although it is an imaginary line. Now the next topic is aperture. Aperture is basically that area from which reflection takes place. जितने एरिया से रिफ्लेक्शन होगा that is aperture. For example यहाँ से देखिए रेज आई टकराएंगे यहाँ और रिफ्लेक्ट होंगे किसी और डायरेक्शन, तो ये पार्ट जो हुआ the part which is taking the part of that glass which is taking part in the process of reflection, that is aperture. Aperture is from here to here.
moving to the next topic, which is principal focus and focal length of concave mirror. As we have studied earlier, what is concave mirror? Concave mirror में पॉलिश की जाती है आउटर सरफेस पे, देखिए पॉलिशेस में कहाँ पे, आउटर सरफेस में, और जो केव्ड इनर सरफेस होगा दैट विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, जो बल्ज्ड पार्ट था, मींस जो निकला हुआ पार्ट, जो बाहर निकला हुआ पार्ट, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेकिन कॉन्केव मिरर में क्या है, जो केव्ड पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इस कॉन्केव मिरर में देखिए these parallel rays are coming. One thing I want to tell you that parallel rays come from an object which is placed on infinity. अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो उससे जो रेज निकलेंगी that will be parallel to the principal axis. I will cover that topic in the further topics when it will come. But here we can see that the parallel rays are coming and getting reflected. See, this ray is coming and reflecting in this direction. This ray is coming and reflecting in this direction. This is the principal axis, and the ray of light goes to this pole and reflects back in the same direction. This ray of light goes to this and reflects back in this direction. This ray of light goes in, strikes on the reflecting surface and goes in this direction. All these rays intersect at a single point. All these rays intersect at a single point. And this point of intersection is known as the focus of concave mirror. ये जो point है जहाँ पर सभी rays ने intersect किया एक दूसरे को, this is called focus. Now what is focal length? Focal length is the length of focus, or we can say that the distance between focus and pole is known as the focal length. जो भी डिस्टेंस है इसकी फोकस से पोल तक की, दैट इज फोकल लेंथ। और ये कॉन्केव मिरर की बात नहीं कर रहे, अगर कॉन्वेक्स की भी बात होगी तो फोकल लेंथ वही होगा। फोकल लेंथ इज ऑलवेज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, आइदर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की। वी कैन सी दैट द polished surface is the inner surface and the reflecting surface is bulged outside. निकला हुआ है, देखिए reflecting. This is the reflecting surface and inner surface is polished. Now the parallel rays are coming. Parallel rays किसके? Principal axis के कारण। तो parallel rays देखिए आ रही हैं। ये parallel rays यहाँ पर भी स्ट्राइक किया reflecting surface को, इस डायरेक्शन में चलेगी। This parallel ray is coming and striking the reflecting surface and going back into this direction. This ray is parallel to the. This ray is the ray which is on the principal axis. Principal axis के ही through अगर कोई ray गई, तो that will be reflect back in the same direction. ये ray यहाँ पर गई, strike की in this direction. This ray like this, and when these rays are produced back, see the reflected ray is this and this. When these rays are produced back, जब इन सभी rays को produce back किया गया, then they seem to cut each other at a single point. In real they don't cut, but they seem to cut, and this happens on the right side of the mirror, or we can say that other side, behind the mirror. So these rays seem to cut at a single point, which is focus. This is the focus of convex mirror. यही focus है इसका convex mirror. Now as we have studied that focal length
the distance of pole, this pole, and this is focus. So the focal length is the distance between pole and focus. Right here, this distance is focal length. Now moving further to the next topic, that is relation between focus and center of curvature. This is very simple. कि focus और center of curvature में relation क्या है? So the basic relation between focus and center of curvature is this, that radius of curvature. Radius of curvature is that the radius of curvature is 2 times the focal length. Means radius of curvature is 2 times the focal length. Or we can say that focus is the midpoint of the radius of curvature. Focus क्या है? Midpoint है इसका, यहां से यहां तक की रेडियस हुई, ये सेंटर है, ये पोल है. The radius of the mirror is the distance between center to the pole, and focus is the midpoint. Focus is the midpoint of radius of curvature. Or we can say that radius of curvature is 2 times the focal length. Focal length is this, and radius is this. We can see that the radius is double times the focal length. ये focal length, ये focal length. जितना ये distance उतना ये distance. इन दोनों को combine कर दिया तो बन गई क्या? Radius. So students, our next topic is the image formation from concave mirror. Image formation is very important, and there are some rules regarding the image formation. Image form होगी concave mirror से भी, convex mirror से भी. Right now we are studying the image formation from concave mirror. Now one thing that should be clear, that image is formed when two rays cut each other. Image तभी बनेगी जब दो रेज इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, आइदर रियल और वर्चुअल. वर्चुअल भी कट कर सकती हैं और रियल में मींस these solid lines are the real lines, and if there is dotted line and they cut each other, then the image formed will be the virtual image. और अगर solid rays से बन रही है, solid line से कोई image बन रही है, that image is called real image, because these rays are real rays and dotted rays are the virtual rays. So in case of image formation through concave mirror, there are 4 rules, and these 4 rules are very important. You should learn or watch them very carefully. The rule number 1 indicates that if any ray is coming parallel to the principal axis, see, this ray is parallel to the principal axis, and we know that the rays which are parallel to principal axis, they come from the object which is placed at infinity. So this ray is coming parallel to the principal axis. When it strikes on the reflecting surface, this reflecting surface, it passes through the focus point. It goes in that direction after passing through this point. This is called focus. Once again, I am telling you that any ray which is parallel to the principal axis, after getting reflected, it passes through the focus point. Now rule number 2. Rule number 2 is just the vice versa of rule number 1. If any ray, any incident or incoming ray is passing through the focus, then it will get reflected in the direction parallel to the principal axis. Or we can say that any ray incoming
which passes through the focus point. After reflection, it becomes parallel to the principal axis. Now the third rule indicates that if any ray of light passes through the center of curvature, अगर कोई ray of light है वो center of curvature से जा रही है, then it gets reflected in the same direction which it was incoming. जहां से वो रे आ रही थी उसी डायरेक्शन में वापस सेंड बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. So the rule number 4 indicates that if any ray strikes the reflecting surface obliquely or making an angle from the principal axis, अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो ऑब्लिकली मींस कुछ एंगल, देखिए ये रे ऑफ लाइट कुछ एंगल बना रही है. दिस एंगल इज आई. किस एंगल बना रही है? प्रिंसिपल एक्सिस. देन आफ्टर रिफ्लेक्शन the reflected ray also makes an angle from the principal axis, that is angle r. So the rule number 4 indicates that this angle of incidence is equal to the angle of reflection. This rule we have studied in the laws of reflection. ये हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं. तो बेसिकली ये रूल बहुत सिंपल है, जनरल. एंगल आई इक्वल